Machephy Eduworld. Good afternoon, everyone. Last time we discussed some questions on work energy theorem. So work energy theorem, it says that the sum of total work done is equal to change in kinetic energy. Equal to change in kinetic energy. We'll be doing some questions on it today also, and we'll include many types of work done also, as well as work done by external agent also. Suppose next question is this. There is a force which equals to 3I cap minus 1.5 J cap. And it acts on a body of mass 5 kg. Now it's given that body is at position 2I cap minus 3J cap meter and is traveling at 4 meters per second. Now this force acts until the body reaches the final position, that is I plus 5J units of meter. Then find speed of the body. Find speed of the body assuming no other force acts on it. Assuming no other force acts on the body. The initial velocity is given when it is at position 2I minus 3J cap. सर या तो पहले वाले का आगे कितना आ रहा है सर √10 √10 ओके So, एक मिनट कैलकुलेशन में जरा गड़बड़ हो रहा था, but I have almost got the answer. Okay. Vishakar, can you send me the photo of solution? WhatsApp? Yes. Yeah. Remember, the √22 will not be the answer. The answer will be √10.
Sir, can हाँ you सर do the रूट 10 first आ रहा question? है. Nirmit, what did you say? Sir, question 1 मेरा वर्क की वैल्यू नेगेटिव आ रही है हाँ, कितना आ रहा है नेगेटिव? -15 joules. -15 करेक्ट है. So this will be -15. And m की वैल्यू 5 given है. 16, 5, 45. ये -200 होगा. Yes, sir. 40 हो जाएगा नहीं? Yes, sir. Then Then 40 will go to the other side. yeah. So 25 equals half of mv square. Yeah. Calculate that. Calculate the velocity. Yes, sir. So understood. Okay. Sir, I have sent. You sent where? विशाखा कहाँ पे सेंड किया है? So done. Start with question number 2. Vishakha, I didn't get your solution. Okay. Okay, let me tell you the solution of this. So ये भी work energy theorem से कर सकते हैं. पहले तो FVD बनाया. हाँ. Then net force 16 न्यूटन आ रहा है. 16 in the forward direction, right? Yeah. Net force 16 आ रहे हैं या F का component 16 आ रहे हैं? सर नेट फोर्स 16 आ रहा है. Okay. F का एक component ऊपर आएगा, कितना आएगा ऊपर? 30 sin 53. That is Sin 53 is 4/5. That's 24. see sine 53 is 4/5. So that will be 24. Yeah. And 20
30 cos 53. 18. 80. तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 16. 60. Normal force is 60. So that means friction will be 2. 2. Okay, so net force का ही work done निकाल लिया. That is also a good option. और individually भी कर सकते थे. Friction का work done और F का work done निकाल लिया. Okay, so this is coming as 16 into 2. Half mass into velocity का square minus 3 का square, right? Yes, sir. So final change in kinetic energy कितना हो जाएगा? That is 32 joules. Delta K is 32 joules. And final velocity कितना आएगा? 5 meter per second. 5 meter per second. Okay, that is correct answer. अच्छा, next question सी. मेरे पास एक spring block system है. और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है. तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, दैट मींस मैंने बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगाया हुआ है यहाँ पे. आई हैव पुट माय हैंड ओवर हियर. Think of it as my hand over here, and that is giving an external force. I am the external agent. So ये mass m है, spring constant k है, and अभी ये spring natural length पे. So natural length में मतलब कोई extension नहीं है. Now what I want to do, I want to lower it slowly. I want to lower it slowly such that it reaches its equilibrium position. धीरे धीरे नीचे कर दिया इसको, such that it reaches its equilibrium position. Let us say यहाँ पे equilibrium है. Natural length से x naught नीचे is its equilibrium position. Okay, और क्योंकि मैं इसको बहुत नीचे धीरे धीरे नीचे ले जा रहा हूँ, such that it does not gain any kinetic energy. So this is the equilibrium position. Equilibrium position पे आने के बाद F external is variable ना, this is variable, ये need के according लगेगा. F external का only purpose है that it reaches its equilibrium position. तो मैं धीरे धीरे होल्ड करते हुए अपने हाथ में इस ब्लॉक को नीचे ला रहा हूँ. So F external is a variable force. It's a variable force, and this moment पे ये x naught reach कर जाएगा equilibrium position पे, F external will become 0. So equilibrium position पे क्या हो रहा है, जो mg है that is balanced by the spring force. At equilibrium, the mg is balanced by the spring force. What you have to find work done by spring, work done by gravity, and work done by external agent. ये तीनों चीजें find out करनी है. And hence prove work energy theorem. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, नेचुरल लेंथ पे था स्प्रिंग, तो अभी नेचुरल लेंथ पे है, तो उसको होल्ड करने के लिए आई हैव टू पुट एन एक्सटर्नल फोर्स, अदरवाइज इट विल एक्सटेंड. mg की वजह से एक्सटेंड हो जाएगा. Then natural length से I have started extending it, and I have started extending it up to its equilibrium position. तो F external continuously vary होगा, और जब equilibrium position आ जाएगा तो F external 0 हो जाएगा.
जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा तो स्प्रिंग वाला फोर्स mg को बैलेंस आउट कर लेगा. So this is the first state, this is the second state, and between the first state and second state, you have to find work done by spring, work done by gravity, and work done by external agent. And then you have to prove the work energy theorem. Try this. What's the value of work done by spring? Sir, 8 minute अभी हुआ है. Okay. See, in this case, block बहुत ही slowly नीचे जा रहा है. Means at each and every point, it is at equilibrium that can be achieved. बहुत ही धीरे-धीरे नीचे ले जा रहा है. बस infinite time में नीचे ले जा रहा है. It is not gaining velocity at any instant. That is what we can assume. Kinetic energy हमेशा ही zero है. So at that instant, F external, this block is always at equilibrium that you can assume. So ऊपर वाला force, that is kx plus F external, that is equal to mg. From here you get F external equals to mg minus kx. And F external is acting upwards and block is going downwards, so work done will be negative of this. Now do all this integration and get the final results of all the works. स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है. ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट का भी वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए. Rashni, you tell me the results once you got them. First is what is work done by spring. So when equilibrium is happening, that is at this position, you can write kx naught equals to mg, जहां से x naught की value आ जाएगी in terms of mass and k. In the final result, you can put this mg by k. Vaishnavi, what is the work done by spring here? Vaishnavi, can you hear me? Okay, let me tell me the amount of work done here. Sir, work done by which force? Spring. Minus m square g square by 2k. M square g square by 2k. Okay, what is work done by gravity? M square g square by k. Square g square by k.
and work done by external agent. Sir, m square g square by k square into k minus mg divided by 2. ये तो ऐसा ही आ जाएगा ना फाइनली. This will be minus mgx not, and this will be plus kx square by 2, right? mg तो कांस्टेंट है, यहाँ पे kx का इंटीग्रेशन हो जाएगा kx square by 2, यहाँ पे x नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. सो x नॉट अगर पुट कर दिया तो ये फाइनली आना चाहिए m स्क्वायर g स्क्वायर बाई 2k ओनली. हाँ सर, वो इंटीग्रेशन में मिस्टेक है. ओके, तो सी यहाँ पे अगेन change kinetic energy 0 है, and if you write your work energy theorem, so work done by spring force plus work done by gravity plus work done by external force, तीनों मिला के change in kinetic energy 0 आ रहा है, तो that will be 0. वेलोसिटी पहले भी 0 थी तो बाद में भी 0 है, तो डेल्टा के 0 हो गया, तीनों का सम यू कैन सी इट इज 0. ओके, तो सेकंड केस में कुछ डिफरेंट कर रहे हैं. द नेक्स्ट केस, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे ही था, एंड फ्रॉम दैट नेचुरल लेंथ वी हैव just released it. I just released it from that point. So जब रिलीज कर रहे हैं, so there is no external force, it will just keep moving down. तो जब मूव डाउन करेगा, so it will pass through the equilibrium position. It pass through first the equilibrium position, और equilibrium position हमने निकाल लिया. equilibrium position में जब ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हो जाए, equilibrium position पे that mg is equal to kx naught. kx भी लिख सकते हैं, but x naught is to define that it is equilibrium position net force 0. So पहले ये reach करेगा at an extension x naught, that is equilibrium position. But जैसे जैसे नीचे जाएगा velocity gain करता जाएगा. equilibrium position पे net force तो 0 है, acceleration तो 0 है, but equilibrium position पे velocity maximum होती है. velocity क्यों maximum होगी? Because अब अगर इसका FBD इस पॉइंट के ऊपर बनाता है तो नीचे mg वाला फोर्स kx से ज्यादा होगा, तो मतलब नेट एक्सेलरेशन नीचे होगा. एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड्स, बट इस पॉइंट के नीचे क्या होगा, kx अभी भी ऊपर लगेगा, mg अभी भी नीचे लगेगा, बट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद एक्सटेंशन काफी बढ़ गया, उस पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन ऊपर लगने लगेगी. एक्सेलरेशन ऊपर लगने लगेगा मींस वेलोसिटी कम होने लगेगी. सो सी एक्सेलरेशन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, दैट मींस वेलोसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा. So equilibrium position पे velocity will be maximum. Let me call that velocity as v naught that you have to find. उसके बाद क्या होगा ब्लॉक फिर, क्योंकि acceleration ऊपर है, it will keep slowing down, and let us say this is the maximum extension. This is the maximum extension. Let me call this as x m. Maximum extension पे again the velocity will become 0 because acceleration ऊपर की तरफ. अगर नीचे की डायरेक्शन में velocity नहीं है तो it can't extend. Velocity should be in the downward direction. तो velocity पहले बढ़ा फिर decrease हुआ. So you have to find this xm and you have to find this v naught. Find this. It's an independent question. First focus on solving the question number 4. Yeah.
सर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक्सेलरेशन नीचे लगेगा कि ऊपर? इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब नेट फोर्स 0 होता है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। दिस इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट फोर्स 0 है। और उसके बाद ऊपर लगेगा ना? उसके बाद ऊपर लगेगा, बिकॉज एक्सटेंशन ज्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू mg, ax इज ग्रेटर देन mg। Harvey, what's the maximum velocity of the block? सर वर्क डन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? Work done at equilibrium by what? लाइक फर्स्ट वाला समझा नहीं, वेलोसिटी। सी यहाँ पे दो ही फोर्सेस है, एक स्प्रिंग वाला फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अपना वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं सर। दो वर्क डन है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv नॉट स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, बिकॉज ये जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं इसको। ये पार्ट क्लियर है? हाँ सर। Okay, from here you can find value of V naught. Work done by spring, I know it is half kx square minus half kx square. Work done by spring is always negative because extension के opposite में work करता है। Second case में velocity, final velocity 0 हो जाए, means change in kinetic energy फिर से 0 हो जाए। Try to figure this out. और भी tell me, कितना आएगा वर्क डन, वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2mgx माइनस kx स्क्वायर बाय m। हाँ बट सी x की वैल्यू तो मुझे पता है ना, जब जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है वहां पे x नॉट इज mg by k। हाँ। क्या put that? इक्विलिब्रियम हमेशा अगर और कोई फोर्सेस नहीं है तो x नॉट इज इक्वल टू mg by k पे ही आएगा, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय mg। देन कितना आएगा वेलोसिटी? mg by root 2 km। हाँ, दैट सीम्स करेक्ट। mg by root 2 km ना? रूट km। mg by root km, root k, so I think v नॉट आना चाहिए g root m by k, ऐसा आना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होगा ये। निर्मित कितना आ रहा है आंसर? सर g into root of 3m by k। 3m by k आ रहा है। अच्छा फिर सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। सर वी नॉट आया। कितना आया? g रूट m बाय रूट k आया। हाँ इतना आ रहा है। Okay, let us solve this. Work done by gravity था mg into x naught,
और वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा -12 kx0 स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग याद कर लेना, इट विल बी वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी हाफ k x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर। ये हमने डिराइव किया हुआ है, x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, दिस वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये इंटीग्रेशन से आया, ऑफ कोर्स, सो यू कैन ऑलवेज derive it from the basic integration, but this is the work done by spring. Okay, इसको पुट करेंगे तो ये माइनस x इनिशियल 0 है, x इनिशियल फाइनल इज x नॉट, एंड दे शुड बी इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m कैंसिल्ड, सो 2gx नॉट माइनस k बाई m x नॉट का स्क्वायर। x नॉट इज इक्वल टू mg बाई k पुट कर सकते हैं इसमें, सो ये आ जाएगा 2mg स्क्वायर बाई k, और यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू mg बाई k पुट कर तो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एक k कैंसिल आउट हो जाएगा, विल गेट mg स्क्वायर बाई k। सो यहाँ से आ जाएगा v नॉट विल बी इक्वल टू रूट g रूट m बाई k। ये v नॉट की वैल्यू आ गई। आई थिंक निर्मित यहाँ पे इसका वर्क डन नेगेटिव नहीं लिया, इसलिए शायद 3 आ रहा है। Yes. हाँ, सो ध्यान रखना है, स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव वर्क करता है अगर नेचुरली वर्क कर रहे हैं तो। स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव वर्क करता है क्योंकि जिधर हम डिस्प्लेसमेंट देंगे उसके ऑपोजिट में फोर्स लगाए, दैट इज द नेचर ऑफ दिस स्प्रिंग। या तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, हाफ के xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर। ओके, देन फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ दिस स्प्रिंग। तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वी कैन टेक द वर्क डन, वी कैन टेक द वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो दो ही ऑब्जेक्ट है दो ही फोर्सेस जो वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट इज द ग्रेविटी एंड सेकंड इज द स्प्रिंग। Bharvi, let's solve it together. Tell me, कौन-कौन से फोर्स, कौन-कौन से वर्क डन होंगे यहाँ पे? Work done by gravity Work done by plus work gravity. done by spring. That should be equal to Half mv square minus half mu square. हाँ, बट दोनों ही वेलोसिटी 0 है, यहाँ से 0. 0 हुआ तो डेल्टा के भी 0 हो गया। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी को हम लिख सकते हैं क्या, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हमने, xm, so that will give us mg into xm। पॉजिटिव होगा बिकॉज mg वाला फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग? Kx square by 2 minus kx square by 2. हाँ, kxm स्क्वायर बाय 2, जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही एक्सटेंशन है, ये 0 हो गया। सो यहाँ से xm कितना आ जाएगा, Two mg by k. 2mg by k, that is correct। और देख सकते हैं, सी दिस इज ट्वाइस ऑफ mg by k, so that means our maximum extension is twice of the natural length, sorry, twice of this extension where this equilibrium is happening। So एक relation है that is true in cases like this, that you can remember। तो जितने लेंथ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उतनी लेंथ में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। And this concept we'll be learning it again in simple harmonic motion। वहां पे एक मोशन होता है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये वापस ऊपर आएगा बिकॉज अभी kx वाला फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है।
फिर ऊपर पहुंचने के बाद ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा। इस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। विल बी स्टडिंग इट लेटर, रोटेशन वगैरह के बाद पढ़ेंगे इसको। So this is what is called the simple harmonic motion, और यहाँ पे we are using just simple work energy theory. तो कहाँ से कहाँ तक का वर्क लेना है, that you should be clear about. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन लिया होता तो भी इतना ही आंसर आता। इस पॉइंट से इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस पॉइंट का वर्क डन, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड V नॉट, सो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बाय प्रैक्टिस यू विल नो कि कौन से 2 पॉइंट का हमेशा वर्क डन लेना चाहिए, कौन से 2 पॉइंट के बीच वर्क डन लेना चाहिए, जिससे कि कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? एनी क्वेश्चंस? तो मूविंग ऑन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के अननोन है, दैट इज वेयर टू फाइंड, और एक ब्लॉक है दैट विल बी स्लाइडिंग डाउन। ब्लॉक को इस पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं तो इट विल स्लाइड डाउन, और 4.8 मीटर ट्रैवल करने के बाद इट विल कंप्रेस द स्प्रिंग बाय सम अमाउंट, it will compress the spring by some amount, and that some amount is given as 20 centimeter. कि 4.8 मीटर के बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं by 20 centimeter, and then it stops. तो पहली बार यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो पहली बार यहाँ पे स्टॉप हो रहा है मीन्स अगेन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ओके, आफ्टर दैट वहां पे स्टॉप होने के बाद स्प्रिंग में क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, सो इट विल नॉट स्टे एट दैट पॉइंट, the spring will push the block back. स्प्रिंग जब ब्लॉक को पुश कर रहा है तो दोबारा ये पूरा हाइट रीच नहीं कर रहा, इट इज जस्ट स्लाइडिंग अप बाय 1 मीटर, स्लाइडिंग अप बाय 1 मीटर, बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन। वेल, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करेगा क्योंकि रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है यहाँ पे। फ्रिक्शन इज डूइंग नेगेटिव वर्क, दैट मींस in both of the cases friction will be doing negative work. So पहले you can take case from point 1 to point 2 कितना वर्क डन हुआ, फिर point 2 to point 3 जब ब्लॉक वापस आ गया दोबारा तो कितना वर्क डन हुआ। 2 इक्वेशंस आ जाएंगे और 2 अननोन्स है म्यू एंड के, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड के। पहला काम, सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखना है दोनों केसेस के लिए, 1 से 2 के लिए और 2 से 3 के लिए। Aditi, tell me the free body diagram of this mass. अभी जब फ्री है तब। So force of gravity will act in the downward direction, और वो ऊपर वाला नॉर्मल फोर्स है, And और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा, yeah, जो हाँ जो ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब initially ऊपर लगेगा, yeah, and value will be हाँ सर। so mg का कंपोनेंट ले सकते हैं, mg sin theta down in incline and mg cos theta perpendicular to the incline. So force will be equal to mu into n is equal to mg cos theta here. हाँ सर। फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा mu mg cos theta. Okay, first सिर्फ 2 के लिए if I want to use my work energy theorem, तो कौन कौन से वर्क डन होंगे यहाँ पे?
कौन कौन सा एलिमेंट वर्क कर रहे हैं, टेल मी। Sir, the box also does some work on the spring. बॉक्स डन वर्क ऑन द स्प्रिंग, ओके, उसको कौन सा वर्क बोलेंगे? हाँ sir. Which work will be it? सी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ब्लॉक का वर्क कर रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू, बट अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स लेने लगेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, राइट, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा कुछ, देन स्प्रिंग वर्क कर रहे हैं, देन फ्रिक्शन वर्क कर रहे हैं, ये 3 वर्क कर रहे हैं। और कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं? जी बस थिंक कि ब्लॉक स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा है और स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है तो वो भी वर्क कर रहा होगा, बट सी जितना न्यूटन थर्ड लॉ से कि जितना फोर्स ब्लॉक स्प्रिंग पे लगा रहा है उतना ही फोर्स स्प्रिंग ब्लॉक पे लगा रहा है। हाँ sir. तो यू कैन अज्यूम कि इन दोनों का वर्क कैंसल आउट हो जा रहा है, बिकॉज अगर जो ब्लॉक जितना डिस्प्लेस होगा स्प्रिंग वाले फोर्स की वजह से उतना ही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, दोनों का वर्क कैंसल आउट हो जाएगा। तो वर्क डन बाय हाँ, ब्लॉक ऑन स्प्रिंग एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक, इनको जीरो कंसिडर कर सकते हैं, दोनों का सम जीरो हो जाएगा, दोनों इंडिविजुअली जीरो नहीं होंगे बट दोनों का सम जीरो हो जाएगा। हाँ sir. सो डेल्टा के कितना लिख सकते हैं? इनिशियली कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है और यहाँ पे स्टॉप कर जा रहा है पॉइंट 2 पे, हम ये 1 से 2 के लिए लिख रहे हैं। सो पॉइंट 1 से 2 के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी Half mv square. नहीं, यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा ना, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर तो लिख सकते हैं, बट v की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज इनिशियली हम जस्ट रिलीज कर रहे हैं यहाँ से, हाँ sir. and that at final point also it stops. So see, when released, block compresses the spring by 20 centimeter and stops momentarily. So this will become as 0. Okay, now tell me work done by gravity कितना होगा यहाँ से यहाँ तक travel करने में? तो दो वे से कर सकते हैं इसको, या तो वर्टिकल हाइट कितना ट्रैवल किया वो कैलकुलेट कर ले, या तो mg के दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट से अलग अलग फोर्स वर्क डन निकाल लेते हैं। सो mg डाउनवर्ड्स है, तो इसके दो कंपोनेंट mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन जिसके अलॉन्ग वर्क डन हो रहा है, और mg cos थीटा के उसका परपेंडिकुलर तो कोई भी वर्क डन नहीं करेगा, so only mg sin थीटा इज डूइंग वर्क। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकते हैं mg sin थीटा यहाँ से 4.8 मीटर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, फिर 0.2 मीटर। इज दिस क्लियर? Sir, can you explain again? सी पहला काम कर सकते हैं, mg का जो फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो फोर्स है उसको नीचे ही ले लिया और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, mg का वर्क डन सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा। सो ये हम लिख लेंगे 4.8 + 2, तो ये 5 है, ये एंगल थीटा है तो ये 5 sin थीटा हो जाए। तो पहला मेथड है तो mg इंटू 5 sin थीटा, राइट, वो वर्क डन आ गया बाय ग्रेविटी। mg फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 sin थीटा। पहला मेथड ये है, या तो mg हाँ के sir. फोर्स के कंपोनेंट से कितना वर्क डन हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो mg cos थीटा कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा बिकॉज mg cos थीटा के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है, all the work is done by mg sin theta only. So mg हाँ sin sir. theta और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ओके ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिख सकते हैं?
पहले नेचुरल लेंथ था, अभी एक्सटेंशन 0.2 है। दिस इज द फॉर्मूला। नेचुरल लेंथ पे एक्सटेंशन 0 होगा, फाइनल 0.2 है। So what should I write here? Sir, it would be 0. नहीं, एक्सटेंशन तो है ना, मतलब कंप्रेस तो हुआ ना स्प्रिंग। हाँ सर, सॉरी मैंने गलत वैल्यू लिया फॉर के। ये तो गिवन ही नहीं है, वी कैन राइट हाफ के। फाइनल कितना कंप्रेशन है, दैट इज 0.2। इनिशियल वाज 0, that will be half k into 0.2 का स्क्वायर। तो ऐसे देख सकते हैं, x इनिशियल माइनस x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर, या तो हाफ के x स्क्वायर, और स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगा तो माइनस लग गया। स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव क्यों? क्योंकि सी ब्लॉक नीचे मूव करने का ट्राई कर रहा है, तो स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगा kx, बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, हाँ सर। सो दैट्स व्हाई वर्क डन इज नेगेटिव। देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? म्यू एम जी, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। माइनस में mg cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? सर 4.8 प्लस 2 हो रहा है। 4.8 प्लस 0.2, करेक्ट। और हाँ ये जी। होना चाहिए 0। यहाँ से फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा, हाँ सर। m की वैल्यू पुट कर लेंगे, g की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो एक इक्वेशन आ जाएगा, k और म्यू अननोन होगा उसमें। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे लिख लेते हैं हम, फिर सॉल्व करेंगे दोनों। सेकेंड केस में अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अब इस 2 से वापस लेट अस से 0.3 पे जा रहा है, 0.3 पे फिर से वेलोसिटी 0 हो रही है। फिर से एफडी बना सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं? if you draw एफडी, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा सेकंड केस के बाद 2 to 3 के लिए। सो बाकी सबका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बट अभी स्पीड ऊपर की डायरेक्शन है। स्पीड ऊपर है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, दैट इज द ओनली चेंज। फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वैल्यू चेंज नहीं होगी। So, फिर से 3 कंपोनेंट आ गए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। दिस इज इक्वल टू 0। अभी कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? 1 मीटर। Aditi, tell me what will be work done by gravity? हाँ सर, इट वुड बी mg sin थीटा इन mg sin थीटा प्लस, नहीं सॉरी, माइनस 1 मीटर। सर वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस क्यों है? बिकॉज अभी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, 2 से 3 में ब्लॉक ऊपर जा रहा है। हाँ सर, हाँ। then work done by spring, सर वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग तो पॉजिटिव, सो पॉजिटिव हाफ के इंटू 0.2 स्क्वायर। पॉजिटिव होगा k into 0.2 स्क्वायर।
नहीं सर सॉरी हाफ के इंटू 1 स्क्वायर होगा. नहीं स्प्रिंग पूरा ऊपर नहीं जाएगा. विल इट गो टुगेदर? 0.2 पे वो फिर से रिलीज कर देगा ना, उसके बाद कांटेक्ट छूट जाएगा. ऐसा लिखा नहीं होगा स्प्रिंग इज अटैच्ड टू ब्लॉक. ओके, 0.2 पे फिर से कांटेक्ट अलग हो जाएगा. स्प्रिंग इज नॉट अटैच्ड टू ब्लॉक, फ्रीली मूव कर सकते. हाँ सर. Okay, after that work done by friction. फोर्स तो उतना ही म्यू mg cos थीटा बट नीचे की डायरेक्शन में. पॉजिटिव हाँ. वर्क और नेगेटिव. नेगेटिव होगा. That will be minus mu mg cos theta into 1 meter. हाँ सर. फिर से स्टॉप कर जा रहा है 0.3 पे, so this becomes 0. So this is my equation 1, this is my equation 2, and I will solve for mu and k. ये spring है, then there is a pulley. Pulley is massless and frictionless, and there is a block of mass m hanging. So if initially the spring is unstretched, initially spring is unstretched, and उसके बाद सिस्टम को रिलीज कर देते हैं, so mass m will go downwards. So find maximum elongation of the spring. Find maximum elongation. Maximum elongation मतलब speed 0 हो जाएगा block. Find maximum elongation of the spring. So सिर्फ equations के terms में नहीं सोचना. Mechanics you can all imagine it. Block को release करेंगे, then again it will first start going down. पहले mg ज्यादा होगा kx से, tension से या kx से, तो नीचे जाएगा. फिर एक टाइम के बाद एक्सटेंशन बढ़ जाएगा mg से, kx mg से ज्यादा हो जाएगा, then block will start slowing down, and when extension is maximum फिर velocity 0 हो जाएगा. And find the value of that elongation. If you have any doubts in the previous question, you can ask or write down the answers. Mu is half and k is 1000 Newton per meter. Let me tell you the maximum elongation here. Sir, 2 into mg minus k divided by k. Work done by spring negative हो जाएगा, half k, let us say x square. Work done by gravity will be Sir, mg. tension. टेंशन वर्क नहीं कर पाएगा. You can see tension यहाँ पे spring को extend कर रहा है, but the same amount here, tension is responsible for lowering the block. So tension will not do any work. टेंशन स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा है और टेंशन ही ब्लॉक को लोअर कर रहा है, तो वो दोनों वर्क कैंसल आउट हो जाएंगे. ठीक है. Okay, sir. From here you will get x is equal to 2 mg by k.
And in this case, what is the maximum compression? So kinetic energy, work done is only done by spring. Work is only done by spring. That will be going in delta K. Work done by spring is, let us say, half minus half kx square extension x7. And initial kinetic energy, final kinetic energy is 0. Initial is half m v naught square. So v naught will come as, no, x we have to find. X will v naught root m by k. इतना हो रहा है? No, sir. That will be the maximum compression. Going to next question. Suppose the spring of spring constant K and block is going with velocity v naught. And it's given that over a small region from here to here, the distance is L, और सिर्फ इस region में ही friction है mu, and all the other regions are frictionless. यहाँ पे mu is 0. Mu is 0, that means they are frictionless. So this region has friction, L length has friction, but this region is frictionless. So find maximum compression in the spring. In this question, यहाँ पे spring को compress कर रहे हैं, and the compression is L. जब release कर रहे हैं तो it will just go above this point. It will go beyond this point. So assuming length of spring is small, you have to find the maximum height reached by the block. Assume that length of the spring is small. Find maximum height reached by the block. Try these questions. शाग्र फर्स्ट वाला हो गया. नहीं सर अभी नहीं हुआ. अच्छा, see, the concept here is there are three forces that are doing work. Two forces, spring and friction. mg कोई भी work नहीं कर रहा because displacement is horizontal. So is work done by both will be equal to change in kinetic energy. Use this to find out the value of maximum compression.
So in the first case, we got the answer. Yeah, spring and friction, both of them are doing work. And final kinetic energy is 0. Initial is half mv naught square. Written by spring, that is minus half kx squared. Written by friction, that is minus mu mgl. Negative sign will get cancelled out, and you'll get x is equal to 2 mgl by k plus minus mv naught square by k under root. This will be the answer. You can take m by k common. सर MV नॉट पहले आया mv naught पहले आया as in what to say MV नॉट स्क्वायर बाय k minus 2 mu mgl by k. yeah m by k, that will be equal to v naught square minus 2 gl like this. हाँ सर. Second वाला भी हो गया बार भी. हाँ. Tell me the value of x. Under root 2 mgh by k. mgh by k. तो फिर let us assume कि h height के बाद x compression हो रहा है. X compression हो रहा है, so loss means work done by friction, sorry, work done by spring plus work done by gravity, that should be 0. Work done by spring is minus half kx squared, and work done by gravity, that will be mgh plus x. Is this the equation that you're getting? नहीं plus x नहीं लिया. हाँ, तो टोटल लॉस लेंगे यहाँ पे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, kx स्क्वायर माइनस mgx 2mgx माइनस 2mgh. इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी. माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ये 4ac mghk divided by 2. तो दो वैल्यूज आ रही है, तो नेगेटिव वाली तो नहीं लेंगे बिकॉज इट वोंट बी पॉसिबल, x नेगेटिव नहीं हो सकता. कम mg by k plus root over mg by k plus m square होना चाहिए, m square g square by k square, and here also m square g square mg h by k.
This should be the answer. So kinetic energy is maximum extension पे 0 ही होगा, but यहाँ पे x एक quadratic equation बन रहा है, so we have to solve it like that. Negative value नहीं ले सकते because x will come out to be negative. That is not possible. X positive ही होगा, so negative value is not taken. Now here spring already compressed here. So work done by spring plus work done by gravity is 0. Work done by spring, that will be half kx squared, this time positive होगा. Work done by gravity क्योंकि block ऊपर जा रहा है, let us say block ऊपर जाएगा, projectile motion कुछ कैसा follow करेगा, and let me assume that maximum height is h. Length of the spring small है तो इसको ignore कर सकते हैं, इस portion को ignore कर सकते हैं. That will be equal to minus mgh, or then after that you cannot write this as 0. You cannot write this as 0 because यहाँ पे there will be a kinetic energy. There will be kinetic energy, and that will be equal to the speed u naught है initially, so it will be u naught cos theta. It will be u naught cos theta. So u naught निकालने के लिए you should know that half kx square extension that goes in minus mg x sine theta plus half mv square, half mu naught square. X is known. From here you can find the value of u naught. Once u naught is known, you know that at maximum height there will be kinetic energy half m u naught square cos square theta minus initial kinetic energy is only u naught square. So that way we can, this can be calculated. So mu naught square by 2, this is just half kx square minus mgx sine theta. So we have half kx square here minus mgh that is equal to half mv naught square common ले सकते हैं. This will be half kx square minus mgx sine theta. यहाँ पे cos square theta minus 1 हो जाएगा, that is minus sine square theta. And x is known, what we have to find is value of h. So we can write mgh is equal to half kx square plus half kx square minus mgx sine theta into sine square theta. And we'll get the value of h as
half kx squared by mg has become a little complicated. Then half kx squared sine squared theta divided by mg minus sine cube theta by mg, x sine cube theta. So this is the maximum height. अगर numbers दिए होते तो calculation easy होता. This is the value of maximum height. mgh is getting energy from the spring. Then it is also getting potential energy. This part is the potential energy wala part. But because all the energy is not lost, u naught cos theta will be remaining in the horizontal direction. So maximum height पे there is still horizontal velocity, and that is reducing our component of the height, value of the height. Okay, next question, suppose it is like this. We have a block. पहला spring है, spring constant is K. Spring constant is K, mass is M, and this spring is compressed by a distance of 4 mg by K. Compressed by distance of 4 mg by K. compress करने के बाद इसको release कर रहे हैं, and when it gets released, after some time it will hit the second spring, which has spring constant of 4K. Spring constant of 4K. So find maximum compression in spring 2. This is spring 1, and this is spring 2. Find maximum compression in spring 2. ये वाला surface friction lesson. So there is this block that is doing work, this spring that is doing work. So find maximum compression in spring 2. Anybody got the answer? Anyone? 2mg by K. mg by K. That's correct. So सबसे पहले we can find the velocity. So work done by spring will be equal to change in kinetic energy. So half K into x square. That will be half K into 4 mg by K ka square. That will go into the kinetic energy. 0 minus minus. And then that will be stored in the other spring. So half into 4K into x square.
I should plus here, and second case where you can write that this is equal to minus half mv square. तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएगा. So that will give you 2 mg by k आ रही. हाँ sir. Okay. Half 4 mg by k दिख रहा है मुझे. 4 4 is 16 by 4 ना. Half kx square equals to half mv naught square. Then this is equal to minus half 4k x square. अच्छा x का रूट लेंगे तो 4 2 mg by k आ जाए. Yeah, 2 mg by k is right. So this will be the last question for today, and I'll be uploading a formula test on the group. So you have to finish it and send me by 5:10. Okay. So I've just uploaded of the group. Okay, start with the formula test. And in the next class, we'll be discussing about conservation of energy, conservation of mechanical energy.